Hello, mic check. Hello. Hello, mic check. Hello. Hello, mic check. Hello, 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 hello. आया कर लेते हो वायरल लेते हो आज के दिन वायरल लेते हो फेसबुक पर क्या चैनल हुआ हेलो माइक चेक हेलो हेलो माइक चेक हेलो लेते हो ना था आज की वायरल लेते हो ना आओ या फुल वॉल्यूम चोर वॉल्यूम बेगे तो फेसबुक पर चला aynen aslında fabla crack mı diyor? Ya banmayı sıfır. Peki. Hello, mic check. Hello, mic check. Hello, mic check. Hello. Assalamu alaikum, good morning and a very warm welcome to everyone. आप सबका दिल से इस्तकबाल है इस फाइनल गेम में TCI मैक्स प्रेजेंट्स विंटर कप 2025 और आज एक फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है इस टूर्नामेंट का। दो टीमें आमने सामने हैं, डाउनटाउन बिजबेहारा वर्सेस रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा। डाउनटाउन बिजबेहारा ने टॉस जीतकर
गेंदबाजी का फैसला किया है और दो उनके बल्लेबाज सलीत रथर और उसके साथ साथ अदनान हफीज एक तगड़ी शुरुआत देते हुए अपनी टीम को। तीसरा ओवर खेल का जारी है, अभी तक 34 रन लगे हैं बोर्ड पे बिना किसी नुकसान पे। सलीत रथर 20 रन पे खेलते हुए और अदनान हफीज 11 बनाए हैं 5 गेंदों पे। जीशान जहूर को आड़े हाथ लिया, कवर्स के ऊपर से एक और बाउंड्री सलीत रथर के नाम। ये खिलाड़ी आज आग उगल रहा है अपने बल्ले से और इसी तरीके की स्टार्ट की प्रतीक्षा थी रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा को और बहुत ही अच्छे जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। एक तगड़ी फाउंडेशन दे सकते हैं अपनी टीम को। दो गेंदें इस ओवर की बची हुई है। जीशान जहूर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और एक ट्रम्प कार्ड है अपनी टीम के लिए, लेकिन सलीत रथर 12 गेंदें 24 रन, 200 के स्ट्राइक रेट से भाग रहे हैं और हल्के हाथों से खेला, कोई रन लेने का मौका वहां पे बना नहीं। 3 ओवर की समाप्ति, 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा। सैम, 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 सलमान भाई, सलमान भैया, इन्हें सैम मस्कर करा लो। परवेज रसूल के हाथ में गेंद, बहुत ही अर्ली आए हैं इस मुकाबले में परवेज रसूल, क्योंकि बहुत ही तगड़ी शुरुआत मिली है रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा को। 38 रन बोर्ड पे लगे हैं अदनान हफीज स्ट्राइक पे। यहाँ पे एक विकेट की जरूरत बिल्कुल है डाउनटाउन बिजबेहारा को और इसी के चलते परवेज रसूल आए हैं। यहाँ पे विकेट मिल गई है, बिल्कुल विकेट गई है। आते ही वो झटका दिलाया परवेज रसूल ने और कीपर ने एक शार्प कैच पकड़ा है विकेट्स के पीछे। वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। पहली सफलता मिल चुकी है रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा की टीम को। ये बड़ा झटका लगता हुआ इसी चीज की प्रतीक्षा कर रही थी डाउनटाउन बिजबेहारा। जो ही परवेज रसूल आए, अपने साथ एक विकेट लेकर आए हैं। परवेज रसूल को यह सफलता मिलती हुई और कीपर ने बहुत ही शार्प कैच पकड़ा है पीछे विकेट्स के पास। नए बल्लेबाज शुभम बट क्रीज की तरफ आते हुए, लेकिन एक अच्छी स्टार्ट मैं फिर भी मानूंगा। इस तरीके की बल्लेबाजी की है अभी तक रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा की टीम ने। एक मंजी हुई शुरुआत, लेकिन परवेज रसूल पहले ओवर में विकेट एक हैबिट बना दिया है इस चीज को। यहाँ से एक अच्छी शुरुआत तो मिली है रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा को। अब विकेट हाथ में रखने, क्योंकि देखिए 20 ओवर का गेम नहीं है, 30 ओवर आपको चलाना पड़ता है ये गेम और एक गलती आपकी टीम पे बहुत भारी साबित हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा गेम को चलाना पड़ेगा। यहाँ से दोनों बल्लेबाजों को एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। हवा में गेंद, फर्स्ट अप, सिंगल के साथ खाता खोलेंगे शुभम बट और वापस सलीद रथर स्ट्राइक पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि सलीद अभी भी मौजूद है वहां पे, जिनका दिन अभी तक बहुत अच्छा गुजरा है। 13 गेंद में 24 रन बनाए हैं सलीद ने। 39 रन एक विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर पारी का चलता हुआ। परवेज रसूल
पहला ओवर और पहली ओवर में वो विकेट मिलती हुई उनको। ये बैट्स पे गेंद ग्लैम्स किया है इस गेंद को, फील्डर वहां पे मौजूद नहीं है और चौका मिल जाएगा सलीत को। देखिए खराब गेंद इस बार, थोड़ा सा लेंथ खराब थी, वो लाइन भी पैड्स की तरफ, और उसका भरपूर फायदा उठाया सलीत ने, क्योंकि जिस फॉर्म में सलीत है इस तरीके की गेंदों को वो बख्शेंगे नहीं। 28 पे पहुंच चुके हैं 14 गेंदों में, फाइनल है आज टीसीआई मैक्स प्रेजेंट्स विंटर कप 2025 का। 2025 के विंटर्स में स्टार्ट हुआ था और फिर विंटर्स के चलते हुए जो हार्श विंटर्स होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, बेसिकली कश्मीर रीजन में, फिर गेम को हॉल्ट किया गया था। और जब ये टूर्नामेंट रिज्यूम हुआ तो ये दोनों टीमें अभी तक बहुत ज़बरदस्त साबित हुई है, इसलिए आज ये फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं इस ब्यूटीफुल वेन्यू पे, ललन क्रिकेट स्टेडियम, आमने सामने डाउनटाउन बिजबेहरा और रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा। गेंद डॉट निकल जाएगी परवेज रसूल का है और काफी अच्छा साबित हुआ है डाउनटाउन के लिए। केवल 6 रन और एक विकेट मिला है इस ओवर में, 4 के बाद 44 एक विकेट के नुकसान पे। Zishan Zahoor has been brought back into the attack from that far end. Zishan Zahoor ये खिलाड़ी बहुत ही खास है, लेकिन इसको पड़ रही मार है अभी, क्योंकि सलीत रथर बहुत ही रेड हॉट फॉर्म में है, सिर्फ चौकों में डील कर रहे हैं। एक छोर से वो विकेट गिरी उनके पार्टनर की, लेकिन सलीत रथर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 33 पे पहुंच चुके हैं 18 गेंदों में, और स्ट्राइक रेट बहुत ही जबरदस्त उनका। जीशान जहूर को थोड़ा सा प्लान्स में चेंज करना पड़ेगा। इस बार भी बैकफुट पे खेला, क्विक सिंगल की कॉल, सिंगल मिल जाएगी यहाँ पे। अच्छा थ्रो था, लेकिन बैट्समैन बहुत ही तेज शुभम बट अभी अभी आया है क्रीज पे, तो थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम आपको क्रीज पे स्पेंड करना पड़ेगा, उसके बाद बड़े शॉट्स की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की फाउंडेशन मिली है, करंट रन रेट जो है वो 10.50 का, मानूंगा कि एक ज़बरदस्त स्टार्ट इस फाइनल में रफ़ी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा की टीम को मिलती हुई। ये चीज़ भी उनके जहन में होगी कि डाउनटाउन बिजबेहारा की बैटिंग जो है बहुत तगड़ी है। 7-8 बैट्समैन इस लाइनअप में शामिल, इवन जो गेंदबाजी कर रहे हैं जीशान जहूर, वो भी बहुत बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। तो एक अच्छा टोटल बनाना पड़ेगा इस विकेट पे। विकेट काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी रोल किया गया है, बैटिंग के लिए बहुत ही सही दिखाई देता हुआ। जो हमारे पिच क्यूरेटर है शफी साहब, वो काफ़ी मेहनत करते हैं विकेट बनाने में, और उनकी वो मेहनत जो है रंग लाती हुई। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ये विकेट दिखाई देता हुआ। वैल्यू फॉर द मनी। और यहाँ पे गेंदबाज अच्छी गेंद करेगा, अच्छे एरिया में बॉल करेगा तो उसको भी वैल्यू है। बैट्समैन स्ट्रोक्स खेलेगा, नेचुरल गेम प्ले दिखाएगा अपना, तो उसको भी वैल्यू है। 49 रन बोर्ड पे। परवेज रसूल दूसरा ओवर लेकर आए अपना मीडिया सेंटर एंड से, यही इसी छोर से विकेट मिली थी परवेज रसूल को, और वापस आते हुए बैक इनटू द अटैक। ऑन स्ट्राइक इज सलीद राथर, played it on back foot straight to the fielder at coverage and no run at all.
परवेज रसूल यहाँ से चीजों को खींच सकते हैं अपनी तरफ। एक और विकेट यहाँ पे अगर मिलेगा तो बैकफुट पे आ जाएगी रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा की टीम। और वही सलीत अफसर जानते हैं ये 6 गेंदें मुझे खेलनी है, किसी भी तरीके से स्ट्राइक रोटेट करनी है और ज्यादा जोखिम नहीं लेंगे परवेज रसूल की गेंद पे। अगर गेंद गलत हुई, अगर खराब लाइन पे गेंद आई या खराब लेंथ पे गेंद आई, वहां पे भरपूर फायदा उठाएंगे, लेकिन कोई रॉन्ग चांस परवेज के सामने नहीं उठाना चाहेंगे। सलीत राठौर पैड पे गेंद, जोरदार अपील, लेकिन आई थिंक इट्स मिसिंग द लेग। परवेज वहां पे बिल्कुल पूछ रहे हैं अंपायर से कि आपने आउट क्यों नहीं दिया, लेकिन मीर रासिक अपने डिसीजन पे बिल्कुल कायम रहते हुए स्वीप शॉट की तरफ गए थे सलीत, लेकिन अंपायर का शायद मानना कि ये डाउन द लेग गेंद जाती हुई। परवेज लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट थे वहां पे। जो प्रोजेक्टेड स्कोर यहां से दिखा रहे हैं वो 267 का। देखिए अगर वहां तक पहुंचेंगे तो मेरा मानना है कि अपर हैंड होगा गेम पे रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा का। बैकफुट पे आए, गैप में गेंद को धकेल दिया है और 4 रन मिल जाएंगे। आउटफील्ड लाइटनिंग फास्ट काउंटर अटैक है सलीत रथर का, जो आखिरी गेंद मिस की थी। परवेज रसूल ने थोड़ा ऑफ साइड पे गेंद डाली थी, लेकिन बहुत ही जबरदस्त शॉट और 4 रन मिलते हुए सलीत रथर को 38 पे पहुंच गए हैं 23 बॉल्स में। बैकफुट पे ही खेला गया शॉट, फील्डर के पास जाएगी गेंद, कोई रन नहीं। देखिए 4 रन आए हैं इस ओवर से। सलीत चाहते होंगे कि अब बस खामोशी रहा जाए इस ओवर में, क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट मिला है। वो परवेज के खिलाफ अब बार बार वो जोखिम नहीं ले सकते। पर लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई है, 1 रन जरूर मिलेगा और ओवर की समाप्ति 6 के बाद 54 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जीशान जहूर को वापस बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। आते ही बड़ा शॉट, हवा में गेंद और 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पे सलीत रथर को। पहली गेंद से दबाव डालने का प्रयास इस ओवर में, और अभी तक काफी कारगर साबित हुए हैं इस कार्य में सलीत रथर। 43 runs, 26 balls. He's playing a gem of a knock here in the finals, big stage, and that's what the doctor ordered. जीशान जरूर को पहली गेंद पे चौका मारा इस ओवर में, और जीशान थोड़े प्रेशर में जरूर होंगे। अच्छे टिप्पे पे गेंद पड़ नहीं रही है, इस बार भी बड़ा शॉट डाउन द ग्राउंड गए हैं और इस बार तो मैक्सिमम मिल जाएगा सलीत रथर को। 2 गेंदें 10 रन, एक तगड़ा स्टार्ट इस ओवर का, और केवल 1 रन दूर अपनी हाफ सेंचुरी से सलीत रथर। 64 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जीशान जहूर इज लुकिंग हेल्पलेस, और अब उसके साथी वहां पे उनसे थोड़ी बातचीत करते हुए, लेकिन सलीत मिडल कर रहे हैं हर एक गेंद को। जिस तरीके की फॉर्म में वो है, तो लग रहा है कि आज बड़े रन आने वाले हैं इस बल्लेबाज के बल्ले से। एक स्लिप वहां पे मौजूद सलीत के लिए। परवेज रसूल इस बार भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, थोड़ी सी रुक के आई गेंद, लेकिन अब लगता है कि मंशा साफ है कि इस पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना है। सलीत रथर की वही सोच है, और ये एक फेयरलेस बैटिंग है, सेल्फलेस एंड फेयरलेस। इस बार अच्छी गेंद थी, गैप में धकेलने का प्रयास, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद। बैकवर्ड पॉइंट पे कोई रन नहीं मिलेगा। थोड़ी सी तेज की थी इस बार जीशान ने। इससे पहले वाली गेंद जो स्लो डाली थी उसको लॉन्ग ऑन की जाने में बड़ा शॉट खेला था सलीत ने।
इस बार हल्के हाथों से खेला, ये गेंद भी डॉट निकल जाएगी। देखिए ये एक अच्छी सोच है, अगर आप विकेट्स में गेंद को रख रहे हैं, थोड़ा सा गेंद को स्ट्रेट होने दे रहे हैं, तो वैल्यू है आपके पास। जीशान जहूर हालांकि काफी स्किलफुल गेंदबाज है, लेकिन कभी कभी दिन खराब होता है आपका, यहाँ से भी आप वापसी जरूर कर सकते हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 64 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा। परवेज रसूल एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये तीसरा ओवर उनका, बैकफुट पे रखने का प्रयास बल्लेबाज को। शुभम अभी तक केवल 5 ही गेंदें खेल लिए है, और नॉन स्ट्राइक एंड से वो बैटिंग एंजॉय कर रहे थे अपने पार्टनर सलीर की, और मजा आ रहा होगा उनको। और ये भी अच्छी सोच कि बस आप सिंगल लेके सलीर को स्ट्राइक पे लाइए, वो मामला सेट कर देंगे, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज है जो गेम को चलाना जानते हैं, और गेंदबाजों को आज अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और जड़ भी रहे हैं। बार सिंगल मिल जाएगा, अच्छी सोच। सलीर तरह क्या इस ओवर में उनकी हाफ सेंचुरी पूरी होगी, और वही परवेज रसूल सोच रहे होंगे कैसे मैं इस खिलाड़ी को जल्दी आउट करके अपनी टीम को इस गेम में वापस लेकर आऊं, क्योंकि अगर हम स्टार्ट की बात करें, ये पहले 8 ओवर्स कंप्लीटली डोमिनेट शो रहा है रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा की तरफ से। बैकफुट पे आए, गैप में गेंद को धकेला, और आउटफील्ड, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही लाइटनिंग फास्ट। 4 रन मिल जाएंगे सलीत को, और इसी के साथ अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करेंगे सलीत रथर, और वेल डिजर्व्ड हाफ सेंचुरी for this man out here in the finals of DCI Mix Presents Winter Cup 2025. 69 runs on board. Parvez Rasool feeling a bit of heat. थोड़ा सा डेवलप होना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज को थोड़ा सा और रीइनिशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे विकेट चाहिए, क्योंकि सलीब जो है, देखिए खिलाड़ी बहुत ही फेयरलेस तरीके से खेल रहे हैं। 53 बनाए हैं 33 बॉल्स पे, स्काउट करना बहुत ही जरूरी। यहाँ पे एक मौका बन सकता था अगर स्लिप होती, स्लिप मौजूद नहीं थी। इसमें कहीं ना कहीं जीत परवेज रसूल के एक साइकोलॉजिकल विन, लेकिन किस्मत बहादुर का साथ देती हुई आज सलीद का लक चमक रहा है। यहाँ पे भी चौका मिला, जिस गेंद पे विकेट मिलना चाहिए था वहां पे चौका मिला। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 73 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पेस की तरफ वापस गए हैं उमर, बैक एंड द अटैक। अच्छा शॉट, बैकफुट पे आते हुए खिलाड़ी वहां पे जरूर मौजूद है। एक ही रन मिलेगा सलीद रथर के पास, वापस स्ट्राइक। 74 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट उमर खुर्शीद। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुए थे, 11 रन कंसीड किए थे। दूसरी बार उनको मौका मिला है, यहाँ पे कमबैक करने का प्रयास जरूर होगा। एक विकेट अगर आप अपनी टीम को स्टेज पे चटका के दे सकते हैं, दैट विल मीन समथिंग फॉर डाउनटाउन बिजबेहारा। सलीत रथ ऑन स्ट्राइक।
पूरी तरीके से गेंद बल्ले पे चढ़ी नहीं इस बार, और दो फील्डर्स ऑन साइड की जानिब वो बाउंड्री राइडर्स, एक खिलाड़ी डीप फाइन लेग पे मौजूद है और एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग के एरिया में। शायद वो बाउंसर का प्रयास रहेगा वहां पे इनटू द विकेट, कान के आसपास गेंद आती हुई, लेकिन यहाँ पे चाहिए होगा एक विकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये फेज, 8 से 20 के बीच का फेज। उमर खुर्शीद तीसरी गेंद लेकर तैयार, कैप में धकेला इस बार गेंद को, 1 रन जरूर मिल जाएगा सलीत रथर को। इसी के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 75 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। उमर वाटसन वहां पे कीपिंग करते हुए डाउनटाउन बिजबहरा के लिए। उमर ने ही वो एक शार्प कैच पकड़ा था परवेज रसूल की गेंद पे। 75 runs for the loss of 1 wicket. It's a 9th over in progress. Umar Khurshid to Shubham Butt. That is high up in the air. It will fall short from the fielder. And they will be coming back for the second run. Good running between the wickets for both these batsmen, Shubham and Salit Rathar. 77 runs on the board for the loss of 1 wicket. Umar Khurshid has conceded 15 so far. Salit Rathar 58 of 36. Great batting, terrific hitting. And Shubham Butt, 9 balls, 5 runs. What will Shubham do now? Will he try a big shot here? Just blocks that one. To the cover agent, no run at all. Umar Khurshid so far he has been good in this over, not conceding much. 77 for the loss of 1 wicket. Rafee Sports Club Subhanpora. This is the final game of TCI Mix presents Winter Cup 2025. Two arch rivals up against each other. That's a half tracker up in the air. Fielder coming under, and he will take it safely. That's what I was mentioning. Into the wicket, short pitch delivery. Fielder was outside of the 30-yard circle at deep fine leg region, and Hazim takes a great catch here to dismiss the batsman Shubham Butt. And Umar Khurshid somehow strikes for his team downtown Bijbehara. 77 for the loss of 2 wickets. That's an important and major breakthrough. That's what the doctor ordered.
रसूल ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है पिछले कई मुकाबलों में, और आज भी दूसरा ओवर डाल रहे हैं, केवल 6 रन कंसीड किए हैं और टाइट लाइन एंड लेंथ के साथ। इशफाक लेफ्टी जो कि नए बल्लेबाज आए हैं अभी अभी कुछ टाइम पहले ही, 3 रन बनाए हैं उन्होंने 9 गेंदों पे। और ये खिलाड़ी भी खेल को चला सकते हैं यहाँ से अपने पार्टनर सलीद रथर के साथ। सलीद लेकिन बहुत इंप्रेस किया है सलीद ने, 68 बनाए हैं अभी तक सलीद रथर ने 12 ओवर की समाप्ति के बाद। 93 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा। उमर खुर्शीद के पास वापस गए हैं कैप्टन। उमर खुर्शीद ने काफी इंप्रेस किया अपनी गेंदबाजी से। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा जरूर साबित हुआ था, लेकिन उसके बाद वापसी उमर खुर्शीद की। एक विकेट चटका है, अभी तक 2 ही विकेट्स गिरे हैं रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा के। उसमें से 1 विकेट उमर खुर्शीद ने चटका है और 1 विकेट परवेज रसूल ने हासिल किया था, वो अपने पहले ही ओवर में। सलीत रथर 68 पे खेल रहे हैं 45 गेंदों में। 93 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। प्रोजेक्टेड स्कोर 230 दिखाई देता हुआ यहाँ से। अगर 230 तक यहाँ से पहुंच पाएंगे रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा तो निराश होंगे नहीं, क्योंकि anything above 120 will be very challenging total. That's what I feel so. और जब हम अच्छी गेंदबाजी करेंगे सेकेंड हाफ में तो कहीं ना कहीं आपके पास मौका होगा गेम जीतने का, एक इम्पोर्टेंट फाइनल जीतने का। और फाइनल गेम में वो रन ऑन द बोर्ड का भी प्रेशर जरूर होता है। तो 200 प्लस आप लगाइए बोर्ड पे और पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी कीजिए। ये रफी स्पोर्ट्स सुभानपुरा के लिए रफी स्पोर्ट्स सुभानपुरा के लिए एक सजेशन मेरी रहेगी, आप 200 प्लस लगाइए बोर्ड पे और आप पावर प्ले में गेंदबाजी अच्छी कीजिए, आपको वैल्यू मिलेगा। यहाँ से एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। देखिए इशफाक लेफ्टी अभी अभी आए हैं, थोड़ा सा समय जरूर लेना चाहेंगे। अच्छे तरीके से टैकल कर रहे हैं गेंदबाजों को। और खुर्शीद भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बैलेंस्ड कंटेस्ट दिखाई देता हुआ अभी दोनों साइड से। सलीम जो है 69 पे खेल रहे हैं 46 बॉल्स पे। इशफाक अभी अभी आए, थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं। और उमर खुर्शीद गेंदबाज की अगर हम बात करें तो भी अच्छे चैनल्स में गेंदबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे फेलो कमेंटेटर, इनसे बातचीत जरूर करेंगे और गेम के इनसाइट्स के बारे में थोड़ा सा जरूर जानना चाहेंगे साहब से। जैसे कि हमें भी पता है कि स्कोर 94 और 2 विकेट गिरे हैं अभी। एक तो सुभानपुरा की टीम को चाहिए जो भी सेट बैट्समैन है सलीट राथर उसको साथ दे, क्योंकि 30 ओवर की गेम है, जितना सेट बैट्समैन को आपके साथ चलाओगे उतना स्कोर आगे आगे चलेगा। और 30 ओवर की गेम में एक बड़ा कम्पिटिटिव स्कोर मिल सकता है अभी। और जिस रिदम में अभी सुभानपुरा की टीम है वो अभी 13 ओवर में 94 फॉर 2 लॉस। तो इधर से आप सिंगल डबल क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है, इधर के डायमेंशन
बहुत बड़े हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक डबल भी ट्रिपल भी हो जाते हैं बीच में। तो वही वही गेम आगे चलानी है। अभी सुभानपुरा की भी टीम बहुत अच्छी रिदम में है, और बॉलर्स को यही चाहिए कि एक चैनल पे बॉल पकड़ के बॉलिंग करे, टाइट बॉलिंग करे, थोड़ी सी फ्री ओवर डॉट निकाले, और ज्यादा से ज्यादा विकेट की तरफ जाए जो सेट बैट्समैन है, क्योंकि अगर सेट बैट्समैन आगे आगे चल गया तो आगे प्रॉब्लम करवा सकता है। डेफिनेटली सैम, आपको क्या लगता है, आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि क्या कितना स्कोर देख रही होगी रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा की टीम, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट डाउनटाउन बिजबिहारा हैज 7 to 8 बैट्समैन जो कि किसी भी स्कोर को छोटा बना सकते हैं, तो कितना स्कोर जहन में होगा रफी स्पोर्ट्स सुभानपुरा की टीम को? जैसे कि हम देख रहे हैं 14 ही ओवर में 100 तक पहुंच गई है टीम। तो यहाँ से कम 220 230 अगर स्कोर हुआ तो बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव स्कोर है, और मुझे नहीं लगता कि उतना स्कोर फिर चेजेबल हो सकता है, क्योंकि ये जब विकेट है खेलते खेलते अच्छा भी होता है, लेकिन चेज में थोड़ा प्रेशर वैशर भी होता है, और उसकी वजह से 230 वेरी बिग स्कोर। हाँ, अगर डाउन टाउन बिजबिहारा 100 180 या 190 तक स्कोर रेस्ट्रिक्ट कर पाई तो वो बहुत अच्छा स्कोर है, स्कोर है डाउन टाउन बिजबिहारा की। लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी हो रही है, सलीम बहुत ही अच्छी फॉर्म में दिखाई देते हुए, और आज शतक आना चाहिए, पैड पे गेंद, हल्की सी अपील जरूर हुई थी लेकिन एंगलिंग डाउन द लेग। उमर रसूल इस टूर्नामेंट में लगभग 2-3 बार मैन ऑफ द मैच, हर मैच में विकेट निकालते हैं, अहम टाइम पे गेंदबाजी करने आ जाए अपनी टीम के लिए, पार्ट टाइम गेंदबाज है उमर रसूल, लेकिन कंसिस्टेंसी दिखाई है, और आज भी ज्यादा रन्स लीक नहीं किए हैं, सलीम रथर को अभी तक ज्यादा मौके दिए नहीं रन बनाने के लिए, लेकिन वही सलीम रथर की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद थी, और आजकल हम अक्सर देखते हैं, ये चीज देखते हैं कि आजकल स्पिनर्स भी वो तेज गति की गेंद डालते हैं, बाउंसर डालने का प्रयास करते हैं। हम आईपीएल में देखते हैं कैसे कृणाल पांड्या वो बाउंसर डालते हैं बैट्समैन को जब उनको मार पड़ रही होती है, तो ये भी एक टैक्टिक है, एक अच्छा मूव रहेगा कि थोड़ी सा बैट्समैन को असमंजस में रखे कि कौन सी गेंद आने वाली है, और ऐसे गेंदबाज को हम स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर कहते हैं, जो दिमाग चलाते हैं अपना, बैट्समैन को पढ़ते कि किस तरीके के शॉट्स बैट्समैन एंटिसिपेट कर रहा है और किस तरीके की गेंदबाजी मेरे को करनी है। उमर रसूल बहुत ही किफायती गेंदबाजी, हालांकि विकेट नहीं मिली है, लेकिन उनके आंकड़े देखिए, अब तीसरा ओवर केवल 9 रन खर्च किए, और एक बहुत अच्छी चीज है उनके लिए और उनकी टीम के लिए। हाँ, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं, मतलब एक ही चैनल में बॉल कर रहे हैं, 3 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए, एरियाज पे बॉल किए। जैसे कि हम देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग चल रही है अभी डाउन टाउन बिजबिहारा की, और हर कोई बॉलर से यही चाहिए कि टाइट बॉलिंग करे बीच में। अभी 99 फॉर 2 लॉस है। अभी देखते हैं यहाँ से उन बॉलर्स को लाइए जो बीच में गेम रुका सकते हैं, जो डॉट ला सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कम स्कोर रेस्ट्रिक्ट करें, वही हमें चाहिए। हाजिर ताहिर बहुत अच्छे बॉलर्स, अंडर 14 के बहुत अच्छे बॉलर हैं, पिछले साल अंडर 14 जेके से खेले हैं। उनसे यही उम्मीद रहेगी कि एक ही चैनल में बॉलिंग करिए, अपनी बॉलिंग पे ट्रस्ट करिए, और फेवर में बॉल डालिए। हाजिर ताहिर ओवर द स्टंप्स, अंपायर को क्रॉस किया, पहली बॉल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, एंड इट्स गोइंग लाइक इट्स ट्रेसेबल। बात से मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपको एक चैनल में बॉलिंग करनी है, आगे बॉल नहीं देनी है, कि आगे बॉल यहाँ पे एक इनविटेशन है बैट्समैन के लिए टू गो अप एंड ओवर। लॉन्ग ऑफ का फील्डर दायरे से बाहर, दूसरी गेंद आज दायरा आते हुए ओवर स्टंप्स, एक और बॉल, और अच्छी गेंद।
Hazim has conceded many runs in the first over, but the captain is backing this bowler Hazim. Very young age. That's what you need from the team. They should properly back you up, and then only you can deliver your best results on the field, off the field. You should be mentally prepared to bowl at any stage of the game. Hazim Tahir, 5 runs so far in this over, has conceded a boundary on the very first ball, but 2 balls, accurate line and accurate length as well. Ishfaq lefty, played back to the bowler, no run at all. That's the channel I was mentioning. If you bowl in the right areas, the batsman will be on back foot, and somehow you will get a chance to dismiss the batsman. And you should set the field according to your bowling plans. There's a player at deep third man area, a fielder at deep point. Bad delivery, bad line, down the leg, wide and a boundary added to the tally. Has missing his line completely. The captain is having a chat, passing on some suggestions to Hazim. It's a pressure game. Finals of PCI Mix presents Winter Cup 2025. They need to soak the pressure. This little boy needs to soak the pressure. Again, missing that line. It would be a wide signal by the umpire, Sohail, Mr. Sohail, and Mr. Rusk, two official umpires for today's final game. We are also thankful to all our officials, our sponsors, DCI Mix, for their consistent support throughout. Be it Bijbehara Premier League, be it South Kashmir Cup, or be it Winter Cup, we are very thankful to them. That's high up in the air. Chance for the fielder. Fielder coming under it or dropped. Would you believe it? That was an absolute dolly. Had it been taken, the story would have been different, and it was Muhib Shafiq, I guess, dropping that easy catch. For a moment, I thought that he will take it, but maybe he lost the sight of the ball. The bowler is not happy at all, and he shouldn't be. To be very fair, it was a very easy catch. At this level, you gotta take these cats because it's a final game. The margin of error is very less, almost zero. Now Salar on strike, pressure on the bowler, swings it. It will be a wide signal by the umpire. Hazim Tahir. He got a chance on the last ball to redeem himself. He created a chance, but fielder not supporting the cause, dropping that absolute dolly. 1-1-2 for the loss of 2 wickets. Not a good sign for downtown Bijbehara. Last ball of this over. Goes for a single on the last ball. 15 are done. Half stage completed. 1-1-3 for the loss of 2 wickets. And we will get to know some insights from Siam about that drop catch. How important are cats in a big game? Cats win you match. The last game we witnessed at the IPL. Almost 14 cats dropped yesterday in 2 matches. And the result is in front of your eyes. Catch win you match, and when you drop them, you win the match. That was an important catch dropped by the batsman. I beg your pardon, dropped by the fielder of the batsman Ishfaq lefty. And how do you think that this will matter at this big stage? जैसे कि हमने देखा कि हाजिम ने पहले चैनल्स में बॉल डाली थी, वहाँ से एक दो बॉल गलत हो सकती है, बहुत अच्छे गेंदबाज है, लेकिन जो चांस दिलवाता है बॉलर, उसको कैश इन करने के लिए फील्डर तैयार रहना चाहिए हर किसी वक्त। जैसे कि फील्डर इधर पे गलती की, क्या पता यहाँ से गेम का रुख बदल जाए, और क्या पता यहाँ से ही गेम बदल जाए। जैसे कि हमने देखा इस
ओवर से पहले एक ड्रॉप चांस हुआ था. Will it cost us? Will it cost downtown Bijbehara? Well, cricket is a game. किसी भी मोड में कुछ भी हो सकता है. And we should know Everything is possible. anything is possible in this game. Definitely, cricket is a game of glorious uncertainties. उमर रसूल back into the attack. एक मौका गवाया था पिछले ओवर में. मुहीब शफीक ने वो कैच छोड़ दिया. हाजिम की अगर हम बात करें, हाजिम ने एक जबरदस्त कैच पकड़ा था उमर खुर्शीद की गेंद पे. मौजूद थे डीप फाइनल एरिया पे, ग्राउंड कवर किया था अच्छा खासा और रनिंग कैच लिया था हाजिम ने. लेकिन जब हाजिम की बारी आई गेंदबाजी करने की तो फील्डर ने सपोर्ट नहीं किया. अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में. इशफाक लेफ्टी और सलीत रथ 22 के चलते कुछ रन जरूर ऐड होंगे. एक 118 रन. उमर रसूल ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में. 2-3 बार मैन ऑफ द मैच भी आए हैं. इस बार हवा में गेंद है, फील्डर से दूर है और 4 रन देकर जाएगी. तलहा इस तरह अपनी गेंद का पीछा जरूर किया था लेकिन उनसे कोसों दूर ये गेंद. बाउंड्री लाइन के पार एक और चौका. With this, the score moves to 1-2-2 for the loss of 2 wickets. Terrific batting display from Salit Rathur. He is on 82 of 55 and he's eyeing for that century. In this big game, he's looking for the century. Marasul is considered the first boundary. Up in the air, away from the fielder again. But this time, he will get only a single though. Imran Salim was present at backward point area, was not able to grab that. It was going like a trace of bullet. Opening the full face of the bat, Salit Rathur moves to 83 of 56. Ishfaq left 7 of 21. Now is the time for Ishfaq to go big. You can understand that you're taking your time, you're playing some balls, but now the situation demands some shots from you. Because you're 8 wickets in hand, you played 22 balls, only 7 runs, you need to power up your innings a bit. 16 are done, 14 to come, 1, 2, 3 for the loss of 2 wickets. Rafee Sports Club, Subhanpora.
Zishan Zahoor, wicketless till now. He has conceded 29. Zishan Zahoor, he needs to make a comeback here. This is his final over. Can he get a wicket for his team? Downtown Bijbehara, they need a wicket. Rafee Sports Club Subhanpora 138 for the loss of 2 wickets. It's the 19th over that we are in. Driven beautifully, beautiful timing. Fielder coming from the long off region towards that cover area. Batsman will go through for a single. Salar Rathal is batting on 90 of 64. Phenomenal batting till now. One man army for his team. That's high up in the air. Imran Salim coming under. Oh, dropped. Once again, a catch has been dropped. And this time it is Imran Salim. Zishan Zahoor almost getting that wicket of Salar Rathal. First miss time for Salar. This is the first foul shot played by Salar so far. But it was safe. Away from the fielder. There was a chance for some time. But Imran was not able to fetch onto that. Cleaned him up. That's a great delivery. Jeff, an absolute peach. Zishan Zahoor finally getting a wicket on his final ball of the quota. And Ishfaq Butt, who was looking clueless from the very beginning of his inning, has to take a long walk back to the dugout. 140 for the loss of 3 wickets. Important breakthrough for downtown Bijbehara. उमर रसूल को गेंदबाजी करने के लिए वापस बुलाया गया है। उमर रसूल वे तो काफ़ी अच्छे साबित हुए हैं अपनी टीम के लिए। हालांकि विकेट्स नहीं चटकाई है कोई भी, लेकिन 5 ओवर में जब आप 25 रन ही देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो मानसिक संतुलन है वो आपके साथ होता है। 141 रन 3 विकेट के नुकसान पे उमर रसूल थोड़ी सी फ्लाइट डिलीवरी ललचाने की कोशिश की थी वहां पे मोहम्मद आमिर को, जो कि अभी अभी आए हैं क्रीज पे। और आसान होगा नहीं नए बैट्समैन के लिए आते ही पहले गेंद से ही अटैक करना। डाउन द ग्राउंड गए हैं, 1 रन जरूर मिलेगा। और अच्छी सोच ही, आप सिंगल निकाल के स्ट्राइक पे लाइए दूसरे बल्लेबाज को। सलीत रथर बने हुए हैं अभी भी क्रीज पे। 92 runs from Salit Rathar of just 66 balls. उमर रसूल एक बार फिर से यहाँ पे 1 रन जरूर मिलेगा। 143 for the loss of 3 wickets. 19.4 overs bowled. 2 more deliveries to come.
That's a good shot in the gap. No chance to stop that one. Racing away towards the boundary. Fine. Fine shot by a fine player. Mohammad Amir off the mark with that boundary. One more delivery to come in this over. 1-4-7 for the loss of 3 wickets. Umar Rasool conceding a boundary and a single on the last ball of the 6th over. 20 are down. 1-4-8 for the loss of 3 wickets. 10 more overs to come. 1-4-8. 10 more overs to come in this inning, and definitely they will try to get as much as possible. If they go 10 runs per over from here, 148 is the current total. They will move to around 250, and 250 will be a very competitive total, a very challenging total to be precise. And that will take some hard work for downtown Bijbehara. Zishan Zakur back into the attack. Good delivery again by Zishan Zahoor. Got a wicket on the last ball of the previous over. Is back into the attack. Play very fine. Will get a single here and he will bring on strike the other batsman Salar. He's on 93. I beg your pardon, 92. Salar. He has got that chance to score the important century, an important game against a top class bowling attack. Calls for the stumping, but the umpire is unmoved. Salar is safe once again. And look how Salar is playing selfless cricket. I mean, he's on 93 of 68. He can take some time, 10 more overs to come. But he's looking to go big, attacking the bowlers every now and then. And that's what we call a selfless cricketer. Salar is on 93 of 68. Played very fine. No chance to stop that one. It will be a boundary for Salar, and he is moved to 97 of 69. And the score moves to 153. I beg your pardon for the loss of 3 wickets. 150 comes up for Rafee Sports Club Subhanpora. They are marching along. They are in a very good position right now. Just four runs from the previous delivery and a dot ball now. He's 3 runs away from his well-deserved century. 153 runs on the board. Again plays it towards the fine leg area, sweeps it cleanly. Hazim will stop the ball, but by the time the batsman will go through for a double, he moves to 99, nervous 99 runs. 21 are done. 155 for the loss of 3 wickets. Rafee Sports Club 1 run away from his century. Salar. बोला तो साहब पता रुका आता है मेरा एक बार पता है Parvez Rasool promoted himself for the bowling. Has bowled 3 overs till now, conceded 20 and got 1 wicket. Quicker on the bats. Glance it towards the onside. He will get a single now. Salar will be on strike. He's on 99. 156 for the loss of 3 wickets. This is the 22nd over we are in right now. Current run rate is at 7.38. Very good position for Rafee Sports Club.
Parvez Rasool to Salit Rathar. Salit turned this one towards the onside, and this is the century for the man. Come at the hour, come at the man. A well-deserved century for Salit Rathar in this high-pressure, high-voltage game in the finals of TCIMX presents Winter Cup 2025 against a top bowling attack of downtown Bijbehara. Salit Rathar, take a bow. Absolute champion stuff. Clutch performance till now. 100 of 72. The scorching heat. A great innings by a great batsman. And this will pave a way for his career in cricket at higher stage. Salit Rathar, champion stuff, absolutely. That's up in the air. Talha dropping that one. Almost covered the area, but at last he dropped that one. So many drop cats today in this game. Talha dropped one. Previously, we saw Muhib dropping one, then Imran Salim dropping one. Three drop cats that could have been a major game-changing catch dropped by the fielders. Fielders didn't support it at all. Towards the onside, that's a good shot. There's a fielder present. Only a single though. 22 a done, 160 for the loss of 3 wickets. Rafee Sports Club Subhanpora. A part-time bowler has been introduced from the far end, replacing Zishan Zahoor Muhib Shafiq into the attack. And on strike will be Salit Rathar against him. Bad length, bad line. It will be a white signal by the umpire. Salit, will he go big? Will he try to charge? That's a great shot down the ground, hammered. He has picked the bones out of it. It will be a boundary for Salit. And now he is looking in a great mood to score some big hits here. Muhib Shafiq, a half volley by him and dispatched in style by Salit, is on 104 of just 74 balls. Again through the covers. No fielder present at all. It will be, I beg your pardon, only a single though. I thought there was no fielder, but there was a protection at the deep cover area. Good delivery this time by Muhib. Last delivery of this over. Salit is on 105. Tries to hit it big, missing the line of the ball completely. Almost got him. Muhib very accurate this time with the ball.
23 at run 169 for the loss of 3 wickets. Rafee Sports Club Subhanpora. Parvez Rasool back into the attack. Salit Rathar, he goes downtown. Mighty hit, mighty blow out of the park. That's a terrific shot. I mean, it was effortless. So much power. Salit Rathar, he moves to the Nelson mark. 111 of just 77. Outstanding stuff. Parvez Rasool feeling the heat in the middle. 6 of the very first ball of his 5th over. Elegant stroke play. Again, effortless and very effective as well. Bad delivery needs a treatment and he delivers. Salit Rathar, he has shifted the gears now. Throttle, and he is going berserk right now. 179 for the loss of 3 wickets. Salit is on 115. Parvez Rasool conceded 10 runs in this over so far. Rafee Sports Club Subhanpora 179 for the loss of 3 wickets. Salit is on 115. What a fine knock. What a gem of a player he is. Slower delivery this time. Experience of Parvez Rasool coming into the play. Good delivery. Batsman will go through for a single. 180 comes up for Rafee Sports Club. Mohammad Amir is on strike now against Parvez Rasool. Good delivery this time. The batsman was trying to block that delivery. Was not able to do so. But he's watching the ball very keenly. He has got a very good technique, Mohammad Amir. That initial movement is very fine from this batsman, Mohammad Amir. Parvez Rasool, last delivery of this over. A dot delivery to end this one. 24 are done. 180 for the loss of 3 wickets.
Welcome back, Muhib Shafiq. Salit Rathar is in a great mood. Bang on, six. Half a dozen runs on the very first ball. Full toss delivery, deserved the punishment and delivered the punishment. Hitman Salit Rathar. He's playing a gem of a knock, a blinder of a knock. Up in the air again and away from the fielder again. Back to back sixes for Salit. Oh my goodness. That has gone all the way into the stands maximum. Two balls, two sixes, 192 for the loss of 3 wickets. Rafee Sports Club Subhanpora and this man Salit Rathar. He's looking like a monster. And again, that has been smashed miles. That's a clean connection. Absolutely nailed that one. 3 back-to-back sixes. Muhib Shafiq. He is very frustrated. What can you do as a bowler? What are the options left? You tried everything out of your textbook, but nothing is working at all. 3 back-to-back sixes, Salit Rathar. And a wide delivery. That's what the pressure causes. That's what we call pressure. No doubt about that. And the keeper, Muhammad Umar, is having a conversation with Muhib Shafiq, giving some suggestions to him. He needs to make a comeback here, Muhib Shafiq, considering 19 so far. Again, he goes through the covers. One bounce. Salit wanted the second, but he will have to satisfy himself with only one. 20 of just 4 balls. Batting. What a batting display. That's good cricket. I mean, when your partner is playing some beautiful shots, you just gotta rotate the strike. You back the strike to the batsman in form. Salit Rathar, he's on 135. Muhib Shafiq, last delivery of this over. Faster through the air. Will go for a single, but that's a very expensive over for downtown Bijbehara. Almost 24 runs from this one. The over comes to end. 25 are done. 2-0-2 for the loss of 3 wickets, and Rafee Sports Club Subhanpora. They're in a very good position. I mean, they are in an extraordinary position. 50 to 60 runs from here. It will create a lot of trouble for the team downtown Bijbehara. Parvez Rasool to Salit Rathar. That's a chance. That's a chance. Parvez going for the catch. Will he take it? No. It was a tough catch. You're running backwards for a catch. It's always considered tough for any fielder, be it Parvez Rasool or be it anyone in the world. That was a half chance, drop down, flick it away, beautiful shot, perfect timing, 4 more runs.
150 runs for Sully Truther. What a magnificent innings. A brilliant 150, pure class on display. He has been unstoppable today. The crowd rises. This has been sheer brilliance. Downtown Bijbehara, they are looking clueless, every player. Watching this absolute monstrous stuff from Salit. He has scored 155 of 88 deliveries. He's rewriting the script here. Salit Rathar, take a bow. What a champion batsman he is. Class player. Umar Khurshid back into the attack from the far end. It will be Umar Khurshid now. Two, two, three for the loss of 4 wickets. Umar Khurshid to Muhammad Amir. Good shot. Calls for a single. Will get very easily. 2-2-4 for the loss of 4 wickets. It's a 27th over that we are in currently. But what a batting display by the batsman Salid Rathar. Patience, skill and power. 150 well earned runs. Akib Pare will be on strike now. First time in this game against Umar Khurshid. Playing it finely towards the onside. Will get a single off the mark on the very first ball. Akib Pare. Muhammad Amir back onto the strike. 3 more deliveries to come in this over. 2-2-5 for the loss of 4 wickets. Projected score showing 2-5-5. Will the team get more than 2-5-5? That will be a very challenging and good total on board. Slower delivery. Played towards the onside. Talha Ashraf is present there, only a single. You have 6 wickets in hand. You should try to score as many as possible runs from here. That will be a good call by the captain of RSS, Rafee Sports Club Subhanpora, to go for big hits, hikes from now. Umar Khurshid, bouncer delivery. The keeper misses it. It will result in a single. It will be in the form of bye. Last delivery of this over, 2-2-7 for the loss of 4 wickets. Last delivery of this over, Umar to Muhammad Amir. Again, only a single though. A good over by Umar Khurshid, conceding only 4 runs in this over. 27 are done, 2-8 for the loss of 4 wickets. We have many viewers joining us on our official YouTube channel. Thank you so much everyone for joining us. Rafee, Mir, Ilahi Official, Rahil Khurshid, Faisal,
Arfat Vlogs, Ayan, Anis, Farooq Ahmad Khandi, Icebergs Resorts. Thank you so much for showing us your love on continuous basis. Hazim Tahir back into the attack has also been very expensive today. Down the ground, hit hard. They will take a single here. Mohammad Amir, he's on 18 and now moves to 19 of 23. Akipare needs to play some big shots over here. Many viewers are joining us on our YouTube channel. Rafee Mir, Ilahi, Official Rahil Khurshi. Thank you so much, everyone. Play and a miss for Akipare. Salih Russell played a gem of a knock today in this scorching heat. The projected score is showing 253. That will be a competitive total on this wicket. Current run rate is still at 8.44. Good batting display by all the batsmen of RSS, especially Salih Russell. 228 runs on board right now. Slower delivery, back of the hand, and dispatched. It has been taken basically. I lost the sight for a moment. That's a good catch at the boundary rope. For a moment, I thought that it's going out of the park, but a clean catch at the deep mid-wicket area. And the batsman is walking back to the dugout. Mohammad Amir playing a good knock now, going back to the dugout. Wicket for Hazim Tahir finally. After conceding 29 in his very first 2 overs, now getting the wicket in his third over.
आखिरी ओवर इस पारी का, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, 2 रन जरूर लेना चाहेंगे लेकिन 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। हाजिम ताहिर आखिरी ओवर करते हुए इस पारी का, हाजिम ताहिर अच्छी गेंदबाजी की है पिछले 1-2 ओवर्स में। हालांकि पहले 2 ओवर्स काफी एक्सपेंसिव गए थे हाजिम के, लेकिन वहां से वापसी, एक विकेट जरूर चटका के दिया उस स्लोअर बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी पे। इरफान लेफ्टी उनके सामने, हाजिम ताहिर क्या चकमा दे सकते हैं बल्लेबाज को। देरी की हुई गेंद, वाइड यॉर्कर का प्रयास और किसी हद तक सक्षम भी रहे उस चीज में। 2 गेंदों का खेल आना बाकी, 247 runs on the board for the loss of 2 wickets, 5 wickets, I beg your pardon। यहां से एक स्ट्रॉन्ग फिनिश की जरूरत होगी, 250 के पार ले जाने की कोशिश होगी, भरपूर कोशिश होगी, क्योंकि वो आपको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है कि हमने बोर्ड पे 250 रन लगा दिए हैं और आप आइए और डिफेंड कीजिएगा इनको। नो बॉल, नो बॉल सिग्नल अंपायर का, नो बॉल सिग्नल। शायद और स्टेप कर बैठे हैं हाजिम वहां पे रन आउट शायद होंगे बैट्समैन। रन आउट के चलते वापस जरूर जाना पड़ेगा, लेकिन अगली गेंद फ्री हिट होगी बल्लेबाज के लिए। नो बॉल थी और स्टेप कर बैठे, और अगली गेंद फ्री हिट, एक लाइसेंस होगा बल्लेबाज के पास कि आप आइए और बड़ा शॉट खेलिए। और इरफान लेफ्टी पूरी कोशिश करेंगे इस गेंद को बाहर भेजने की। 250 के पार ये टीम पहुंच गई है, 250 के पार। अहमद दिलावर स्ट्राइक पे, प्लेइंग अ मिस, ये प्रेशियस डॉट बॉल हाजिम के लिए फ्री हिट थी, लेकिन ज्यादा कुछ डैमेज कर नहीं पाए बल्लेबाज इस गेंद पे। आखिरी गेंद होगी हाजिम की। 250 के पार ये टीम एक बार फिर से प्लेइंग अ मिस, डॉट बॉल के साथ ही संतुष्ट रहेंगे। ढाई सौ का पहाड़ा चढ़ना पड़ेगा डाउनटाउन बिजबिहार को, अगर ये मैच जीतना है तो 250 रन का पीछा करना पड़ेगा। एक विशाल कायक स्कोर होगा इस टीम के लिए। हम मिलेंगे आपके साथ सेकेंड इनिंग्स में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
Good afternoon and welcome back everyone to the official YouTube channel of BPL. Downtown Bijbehara chasing a total of 250 runs and two opening batsmen out there in the center, Parvez Rasool, and with him is Muhammad Umar. First over bowled 7 runs, a decent start for Downtown Bijbehara. They have a required run rate of 8.38. Parvez Rasool is looking in good form from the previous 3-4 games. Ahmad Dilawar conceded 7 runs off his first over. Muhammad Umar will be on strike now. And it will be a new bowler introduced from that far end. Irfan has got the ball in his hands. A spinner has been introduced very early in this game in the run chase. Irfan lefty is going to ball now. He's got a protection outside of the 30-yard circle at the long on and long off region for Muhammad Umar. First ball, first up. Placed it beautifully, but the fielder does well, stopping that ball at the cover area between the cover point and the point fielder. 8 runs on the board. Parvez Rasool will be on strike now. He has scored a boundary in the previous over, flicking this one away. Beautiful timing and excellent placement as well. 4 more runs added to the tally. Parvez Rasool just glancing it towards the onside. Beautiful timing once again. Effortless and very effective. Now they have got the protection. A deep square-leg area for Parvez Rasool, bringing back the fielders from long off in to mid off region. A vacant area in the offside. He tries to play it on back foot. Sharp delivery there by Irfan lefty. No clue at all or whatsoever. Current run rate 8, exactly 8, and the required run rate is in the limit of 8.35. So it should not be the problem for Downtown Bijbehara. They just need to stitch a partnership. They just need to get off to a good start from here without losing any wicket. Score around 60 to 70 runs in the first 10 overs. You can have the upper hand in the game. But at the same time, he would like to capitalize the power play. Muhammad Umar, he goes down the ground. Fielder was there, but falling short of him. One bounce to him, gets a single, and will bring on Parvez Rasool's strike. 14 runs on the board, one more delivery to come in this over. That's a good delivery again. He was trying to play that sweep shot. Missing the line of the ball completely. A dot ball to end the over. 2 are done. 14 for the loss of 2 wickets.
Ahmad Dilawar back into the attack. He has conceded 7 in his very first over. Mohammad Umar is taking his time here, having that SLS blade in his hand. Can he do something wonderful today? With that bat in his hand, 2 is the call. They are charging back for the second. Parvez Rasool is very quick. That's a terrific shot. Mohammad Umar, 1 bounce, 2 bounce over the fence for a boundary. That's what the situation demands from him. A couple of big shots to get off the good start for his team downtown Bijbehara as they are chasing a humongous total of 250. So you need to capitalize the power play as much as possible. 27 runs on the board. This is the 4th over that we are in currently. They're going only with Sipners right now. Mohammad Umar again. Beautiful timing. An excellent placement as well. 4 more runs added to the tally. 2 back-to-back boundaries will give him a sort of confidence as well. Confident strokes. Excellent timing. Irfan lefty needs to change his plans. Calls for a quick single. Will take it very easily. Good running between the wickets. Parvez Rasool and Mohammad Umar. At this at this age, Parvez Rasool is still looking fit and fine. As fit as fiddle.
One more run added. 34 runs on the board for the loss of none. Good batting, both these batsmen. Good start for downtown Bijbehara. Parvez Rasool on strike. Driven beautifully. Calls for a quick single, will take it very comfortably. A single to end this over. 4 done, 35 for the loss of none. Downtown Bijbehara are well in this chase.
बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिला है रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा की टीम को। जब वो बैटिंग कर रहे थे तो अच्छा स्टार्ट मिला था उनको, और वैसा ही कुछ स्टार्ट दिया है डाउनटाउन बिजबिहारा को इन दोनों बल्लेबाजों ने। परवेज रसूल, बड़ा शॉट, स्टैंड्स में डिपॉजिट, स्टैंड एंड डिलीवर। दैट इज अ मास्टर क्लास बाय वन एंड ओनली परवेज रसूल। बड़ा शॉट और सीधा 6 रन। ये पार्टनरशिप जो है इन दोनों के बीच में 52 रन्स की हुई है ओनली ऑन 31 बॉल्स। ग्रेट बैटिंग डिस्प्ले बाय परवेज रसूल एंड मोहम्मद उमर एज वेल। दोनों बल्लेबाजों ने एक बहुत ही शानदार शुरुआत दी है डाउनटाउन बिजबिहारा को। ऐसी शुरुआत की अपेक्षा थी, ऐसी कुछ शुरुआत हुई थी रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा की तरफ से भी। तो शाना बशाना चल रहे हैं, compete कर रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। बड़ा गेम है, फाइनल्स का गेम है, प्रेशर दोनों तरफ से है, लेकिन प्रेशर में जो खिलाड़ी खेलता है वही निखरता है, और जो बिखरता है वो तो ऑब्वियसली फाइनल जो है वो हार जाएंगे। लेकिन अभी तक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। एक बैलेंस्ड कंटेस्ट देखने को मिला है बैट और बॉल का। ऐसी कुछ शुरुआत हुई थी रफी स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से भी, और वैसी ही शुरुआत मिली है इन दोनों बल्लेबाजों को। चाहे हम परवेज रसूल की बात करें, कुछ खूबसूरत शॉट्स खेले हैं परवेज रसूल ने। मोहम्मद उमर की बात करें, इन्होंने भी लाजवाब बैटिंग की है। इस बार सिर्फ बैट का फेस खोला था परवेज रसूल ने, वो दिशा दिखाने की कोशिश थी, और एक रन वहां पे भी चुराया। बहुत ही क्लेवर बैट्समैन है परवेज रसूल, आप उनको आसानी से आउट कर नहीं सकते। बिजी प्लेयर है क्रीज पे। मोहम्मद उमर स्ट्राइक में। इस बार गेंद बाहरी किनारा लेते हुए गेंद छिटक जाएगी वहां पे, और 4 रन मिल जाएंगे मोहम्मद उमर को। 4 रन खाते में आ जाएंगे डाउनटाउन बिजबिहारा के। डाउनटाउन बिजबिहारा, ग्रेट स्टार्ट फॉर देम। 59 रन, बोर्ड पे भी एक गेंद का आना बाकी, और बिल्कुल वो जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसी के हिसाब से चल रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। हर एक ओवर में एक एक आध बाउंड्री तलाश तलाश रहे, और उसके साथ साथ स्ट्राइक रोटेशन। ठीक है, अगर आप ये चीज करेंगे ना, आप स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे, बीच में एक आध बाउंड्री लग जाएगी। लेकिन आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको डॉट बॉल परसेंटेज कम करना है। ये पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी होती हुई। 59 रन बोर्ड पे। आखिरी गेंद इस ओवर की, मोहम्मद सलीम ने 13 रन खर्च किए अभी तक। यहाँ पे एक विकेट चाहिए रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा को, एक अर्ली ब्रेक थ्रू चाहिए जो अभी तक मिला है नहीं। और मैं बताता चलूं कि एक भी पेसर का इस्तेमाल किया नहीं है अभी तक रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा ने। देखिए, मैं मानता हूं ग्राउंड बड़ा है, डायमेंशंस बड़े हैं, स्पिन को हेल्प मिलती है थोड़ा बहुत। आज विकेट वैसे बहुत ही पाटा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी स्पिनर्स को थोड़ी सी हेल्प जरूर मिलती है। लेकिन ये चीज मेरी सोच से बहुत परे है कि आपने अभी तक एक भी मीडियम पेसर का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने देखा फर्स्ट इनिंग्स में जैसे उमर खुर्शीद ने गेंदबाजी की, बीइंग अ पेसर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। आपके पास भी एक ऐसा पेसर होना चाहिए जो इनटू द विकेट गेंदबाजी करे, सरफेस में तगड़ी गेंदबाजी करे। वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं अब बैट्समैन ने 5-6 ओवर स्पिन के खेले हैं, तो यूज्ड हो गए बैट्समैन। आप सेटल करा रहे हो बैट्समैन बैट्समैन को कि आप स्पिन खेलिए। यहाँ पे एक आध पेसर होना चाहिए जो सरप्राइज करे अपनी गेंदों से, लेकिन अभी तक वो देखने को मिला है नहीं। शायद एक ट्रिक मिस कर बैठे हैं राफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा के कप्तान। इरफान लेफ्टी के पास वापस गए हैं, शायद ये गैम्बल हो सकता है। 20 रन खर्च किए इरफान ने अपने 2 ओवर्स में। परवेज रसूल के पास मौका इस ओवर को और बड़ा बनाने का। ऑन साइड की जानिब खेला है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, थोड़ा सा फंबल होता हुआ और 2 रन मिल जाएंगे।
फिर से बल्लेबाज परवेज रसूल को एक सूझबूझ भरी इनिंग परवेज खेलते हुए जानते हैं उनके विकेट की अहमियत इस बड़े रन चेज में भी। फाइनल्स में 250 बोर्ड पे प्रेशर है, लेकिन ये खिलाड़ी प्रेशर में ही खेलता है ना। बहुत ही जबरदस्त शॉट, कवर ड्राइव, प्योर टाइमिंग, होल्ड द पोज, चौका मिलता हुआ परवेज रसूल को। इट्स ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन एंड दैट मैन इज परवेज रसूल। देखिए इस शॉट को आप लूप पे चलाइए, मैं बार बार देखता रहूं। और सीखना चाहिए नई जनरेशन को कि बड़े लेवल पे क्रिकेट किस तरीके से खेली जाती है। एक बार थोड़ी छोटी थी गेंद, ऑन साइड की जानिब खेला है, डाउन द ग्राउंड अलोंग द कार्पेट, एक रन जरूर मिल जाएगा। और देखिए चौका, उसके बाद एक सिंगल, स्ट्राइक रोटेशन, ये होती है बड़े खिलाड़ी की निशानी। 66 runs on the board, 3 more deliveries to come। मोहम्मद उमर, बड़ा शॉट, हवा में गेंद, पूरी तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं, कैच का मौका बन सकता था, छूट गया और 2 रन भी मिल जाएंगे यहां पे। जले पे नमक इसे हम कहते हैं। इट्स कॉल्ड द सॉल्ट ऑन द वुंड्स। कैट्स व्हेन यू मैच, कैट्स बहुत भारी पड़ते हैं भैया, छोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन आपने छोड़ दिया है, हमने पहले भी देखा। ये तो आज की कहानी ही रही है, बहुत ही कैच छोड़े गए हैं दोनों तरफ से। चलिए मोहम्मद उमर का भी एक छूटा, हालांकि कीपिंग में उन्होंने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था मोहम्मद उमर ने, उनका यहाँ पे छूट गया। उनके लिए एक पॉजिटिव चीज, इस बार पैड पे गेंद ऑन साइड की जानिब खेला, 2 रन की मांग जरूर है परवेज रसूल की, वो बहुत ही तेज है, एज फिट एज फिडल परवेज रसूल। अभी भी आखिरी गेंद का आना बाकी। इरफान लेफ्टी एक और थोड़ा सा एक्सपेंसिव साबित होता हुआ। 10 की उनकी इकोनॉमी जो स्टार्टिंग से रही थी वो अभी भी जारी है। आखिरी गेंद इस ओवर की, डॉट बॉल के साथ इस ओवर का एंड होगा, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में डाउनटाउन बिजबहारा, 70 रन बोर्ड पे 7 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मोहम्मद सलीम गेंदबाजी कंटिन्यू करेंगे। अभी भी मैं बहुत ही हैरान हूं कि किसी भी पेसर के पास नहीं गए हैं कैप्टन। परवेज रसूल स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, अब एक पेसर को जरूर लाना चाहिए था, थोड़ा सा टेस्ट कराना चाहिए था अपने पेसर्स को। मोहम्मद सलीम एक्सपीरियंस इनके पास, लेकिन 13 रन तो इन्होंने भी खर्च किए हैं ना। और ऐसे ये गेंदबाजी करते रहेंगे तो शाम तक टहलाते रहेंगे गेंदों को परवेज रसूल। काफी एक्सपीरियंस परवेज रसूल के पास डोमेस्टिक का, इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का, और ऐसी गेंदों को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। एक और अच्छा शॉट, वन बाउंस ओवर द फेंस, काउ कॉर्नर के एरिया से इस गेंद को निकाला है। जिस तरीके के फॉर्म में है अब तो लग रहा है कि
ऐसे अगर खेलते रहेंगे तो 250 रन भी कम पड़ेंगे. And I once again like to mention that maybe the captain of RSS missed a trick here. You got to give some chance to your pacers as well so that they can come and explore things as well. But you are going with the Sydney's back to back 8 overs and you're paying the price in front of you, everything. They're going berserk, 74 runs. And it's the 8th over that we are in currently. Mohammad Salim, 4th ball of this over to Parvez Rasool. This time he tried to cut the ball, but misses it completely. Otherwise, it would have been a good shot. In the gap again, two is the call. They are rushing back for the second. That's good running between the wickets. As I said, he's as fit as a fiddle in the center. Very busy player. He scored 36 of 22 balls. Parvez Rasool, Mohammad Salim, last ball of this over. Again, calls for a quick single. Will take the single very easily. With that, the 8th over comes to close. 77 for the loss of none downtown Bijbehara. They are going good in the streets. A new bowling change has been introduced and welcomed in style. 4 runs for Parvez Rasool. Mohammad Ashraf into the attack. Half volley, over pace. And Parvez, as usual, too elegant with his timing, too classical with his timing. Downtown Bijbehara, they're marching along. 81 runs on the board. And this is the over that they can make big. Outside edge. Oh, falling short of the fielder. Mohammad Ashraf bowling those loose deliveries, trying to trap the batsman over there. That's through the covers. Will get a single. Parvez Rasool wanted a second, but Mohammad Umar was not looking interested. Now they will get the second in the form of overthrow. Some extra runs added. Pressure mounting on the bowler. Pressure mounting on the fielders. Although 250s are always a good total on the board, but when you've got batsmen like Mohammad Umar and Parvez there in the center, they can do impossible possible. 2 more runs. Good running between the wickets. They're very fit. That's what you need at the bigger stage. At a ground like Bijbehara, you need to be fit because the ground dimensions are quite large.
through the square boundaries 70 to 75, the front boundary 70 to 75 as well. The ground is pretty large and you need to do something out of the box as a batter to score the runs. Don't just go for those boundaries and sixes. Try to manipulate, maneuver the ball through the gaps. Try to take some singles and doubles as well whenever you get the chance. Parvez Rasool comes down the track through the covers. He didn't get the timing right this time, but he will get a single very comfortably. One more delivery to come. 86 runs on the board. Mohammad Umar. He goes downtown. Mohammad Umar. Fielder will not be able to stop that one. That was meant to be punished. Half volley. And you rarely see Mohammad Umar missing these balls. This partnership is going too well for downtown Bijbehara. What number? 90 runs on the board already. 9 overs done. Taking the bowlers on merit. Another signal from that far end. Parvez Rasool on strike. Goes for a single. Just reading the bowlers and then playing on merit. That's the story of the day. 91 runs on the board. 159 runs are required from here. In 125 balls. It won't be an issue if these batsmen score some more runs here for their team. This partnership is already of 92 runs and they can stretch it long because they have got that ability. One side it's Mohammad Umar who is playing fearless cricket. Another side it's Parvez Rasool who is playing calculated cricket, risk-free shots, and he's getting the value for his strokes as well. Imtiaz with his first over. Rafee Sports Club Subhanpora, they need a breakthrough. They badly need a breakthrough. They are looking at some sort of tension. 250 was a good total on board, but when the opposite team starts their innings like this, they got off the flyer and now they are just flourishing. And that's a half century for Parvez Rasool, a well-deserved half century in the run chase. The man, the myth, the legend Parvez Rasool once again. Back-to-back victories for him. Yesterday at the Lokpipura cricket ground, now in Nalendrasu, and Mohammad Umar joins the party. Into the orbit, up and away. 6 runs. Execute timing, and what a way to bring the century for his team. Still 1 run short of that century mark.
Downtown Bijbehara. Now they will get a century. And what a way to bring the century. A partnership, a stand of 100 runs by Muhammad Umar and Parvez Rasool. And Muhammad Umar also got that well-deserved half century. Beautiful and whatnot. I'm out of words. Slog sweep. I beg your pardon. A sweep shot for a single. They're going well in this chase. Contribution, both these batsmen, 101 runs of 10 overs. A very good position. Required run rate less than 8. It's just 7.45. Current run rate flying at the rate of 10.05. That's a terrific hit downtown. 6 more runs. Parvez, you beauty. Got the timing right. Got the placement right. The best placement is through the skies. And that one went through the skies for a maximum hit. Can't bowl like this, mate. You got to be really accurate. You can't bowl like that all over again and again. Don't bowl like this. He will punish you. He will definitely punish you. On the back foot. A good stop by the fielder there at backward point region. 107 for the loss of none. Again through the covers. Fielder Ahmad Dilawar will not be able to stop it. He's playing the shots on merit. He's toying the bowlers now. He's well set on crease. Doing his best for his team downtown Bijbehara in the finals. Down the ground again. Fielder is there. Only one run. Oh, fumble. But no problem there. Only a single again. One 112 runs on the board. 112. Muhammad Umar is going to face Muhammad Ashraf. It's Muhammad versus Muhammad. The battle is on. Sweeps it very beautifully. Protection is there, so it will be only a single. Last ball of this over. Parvez Rasool will be on strike. He's on 57 of just 34. That's a big shot again, and it's out of the park. 6 runs. See that one flying and flying all over again and again. That's Parvez Rasool for you.
115 for the loss of none. Ishfaq lefty back into the attack. And he's bowling his first over, I beg your pardon. Mohammad Umar is batting on 52 of 30 balls. Beautiful shot again, turning this one towards the onside. Calls for a single, will take that very comfortably. "116 for the loss of none. Ishfaq lefty is bowling his first over. They're looking for a wicket. They need a wicket badly. They need a breakthrough. And I cannot understand what kind of thinking it is to bring on spinners all over again and again. They're not using even a single pacer. So use some pacers. You can bowl into the surface, get you some wickets, because Parvez Rasool and Mohammad Umar, they're getting used to spinners. And they are doing the decent job so far. Current run rate 9.97. Required run rate less than 8 now. It's just 7.27. A double on the last delivery as well. Look at the frustrated faces of Rafee Sports Club. They're looking clueless. They're looking helpless. 12 overs comes to close. 119 for the loss of none. The new batsman out there in the center, Talha Ashraf. Parvez Rasool, the last dismissed batsman, after playing a good knock of 57, is now resting in the dugout. And out comes Talha Ashraf in at number 3. Imtiaz to Talha. That's a good shot. 2 is the call. They will have to settle for only 1. If there's a score moves to 120 runs, Parvez has done his job, scoring some important runs. First up in the power play,
giving a good start to the team. Muhammadu Umar is still there. Single again on this occasion, Muhammad Umar. Now he needs to be at the crease till the last. He needs to take the responsibility as a batter. He needs to be there. Cuts it away, finally. Finds the fielder, no run at all. One 131 needed in 108 balls. Parvez Rasool, the last dismissal batsman. But Talha Ashraf, he can also play a great innings for his team downtown Bijbehara. Through the covers, good shot. We'll get the value for this shot. 2 runs added on this occasion also. Downtown Bijbehara are marching along in this chase. They're cruising. And Tala is looking very confident the way he's melting every ball and just playing through the line. Liking the fact that he's playing every ball through the line. No ugly shot, no cross batted shot. A dot ball, a rare dot ball. High up in the air, fielder settling under and takes it. Talha is gone, second wicket down. No need to play that type of stroke at this moment. It's a brain fader shot by Talha Ashraf and he is taking a long walk back again. Second one down. And Adnan is making his way out in the center at number 4.
Adnan Tak is the new batter out there. Last shot played by Talha Ashraf was a brain fade shot. There was no use of that shot, no need of that shot to be precise. And your required run rate is less than 8, it's just 7.21. Are you trying to play all those big shots, those fancy shots, wannabe fancy shots? You can just rotate the strike for 3 to 4 overs, just play run a ball game. That's what the situation demands. But you're coming and going for the hoiks. That's not acceptable, Talha. See, the required run rate less than 8. In fact, it's just 7. Muhammad Umar still stick there, still around. That's what we call it. Quality of a player. Down the ground, hit hard. Chase for the fielder. He'll stop it near the boundary corner, but the batsman will go through for a single. Good running. Adnan Tak should take his time here. Build his innings step by step. Like that. Good running again by Adnan. They are charging back for the second. That's excellent. That's how they will like it, how they will take it. Beautiful. Very eye-pleasing cricketing moments like these. You're very clever. You convert single into double, doubles into triples. That's the beauty of this game. When we talk about Nilandusu cricket ground, it's very big in dimensions. 70 to 75-meter boundaries. Through the corners, through scab, in front as well. Good rotation of strike by Adnan. That's beautifully placed. No fielder is there. And the ball will dribble away towards the boundary fence. Muhammad Umar, guts and glory as well. Strength as well as that elegant timing, elegant touch. That's what we call it. Improvisation at its very best. 14 done, 1-3-3 for the loss of 2 wickets downtown Bijbehara.
मोहम्मद उमर बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए 73 पे पहुंच गए हैं मोहम्मद उमर, और अदनान भी बखूबी साथ देते हुए उनका, जानते हैं कि उमर अच्छी फॉर्म में है, सिंगल देके उनको स्ट्राइक पे ला रहे हैं। और काफी अच्छी सोच मोहम्मद उमर की और अदनान टाक की, तालमेल आपस में बहुत ही अच्छा दोनों का। उमर बीच बीच में वो बड़े शॉट्स भी खेल रहे हैं जब दरकार हो रही है टीम को। और एक और अच्छा ओवर गढ़ता हुआ ये डाउनटाउन बिजबिहारा के लिए 16 की समाप्ति के बाद 152 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। डाउनटाउन बिजबिहारा बस 98 रन दूर इस फाइनल को अपने नाम करने के लिए। जिशान, Adnan Tak on back foot along the carpet for a single will bring Mohammad Umar on strike. He's batting on 74 of just 46. Outstanding batting display. We have seen pretty much today. First of all, from Salar, who scored a mammoth 150 runs. And now Mohammad Umar is playing a gem of a knock, equally supported by every batsman out there. We talk about Parvez Rasool, he scored a magnificent half century first up. And then the other guy, Adnan Tak, who is still present on the crease, on the wicket. Runner ball 9 of 9 is doing a good job for his team. They just require 92 of 78 balls. It should be a cakewalk for downtown Bijbehara. Ishfaq lefty back into the attack. On strike will be Mohammad Umar. He's on 75. Required run rate still in control. Just under 8. It's 7.05. Adnan driven. You get a single. Wearing the jersey number 8.
I believe Adnan is a very talented batsman and he can do something wonderful for his career in future. Muhammad Umar, that's a terrific hit. Beautifully placed. 4 more runs. That's the kind of talent he possesses. 164 runs on board. Muhammad Umar scoring the boundary in every over now and then. And I still cannot believe why Rafee Sports Club Subhanpora is using only signals. That's a mighty blow. Even drones don't fly there. Into the stands, deposited. The ball was almost lost there. It will take some time to get back. Now it's coming to run a ball. 80 needed of just 74. And that's very sensible cricket. A big shot, a six, and tapping the ball and getting the single. Excellent use of the mind. Clever batsman. Muhammad Umar, he's on 87. Now dark. Last ball of this over. Driven. A dot ball to end this over. 18 done. 171 for the loss of 2 wickets. Downtown Bijbehara. Number one. 14. Downtown Bijbehara. So, 18 done. 171 for the loss of 2 wickets. Downtown Bijbehara. So, 18 done. 171 for the loss of 2 wickets. Downtown Bijbehara. Ooh. Ahmed Dilawar back into the attack. He's considered 31 so far. He's bowling his fourth over, wicketless. Now it seems like the game is slipping away from the hands of Rafee Sports Club Subhanpura. Cuts it well. Adnan Dak will get a single. He will bring Muhammad Umar on strike once again. He's on 92 of 53 balls. That's a beautiful shot again. Straight to the field and no run at all.
Altıdan skor. Arsa tak. Bowler नहीं हुई तो भी. İmtiyaz Ahmet imtiyaz. Imtiaz back into the attack. Current run rate 9.37, required run rate 6.55. 178 runs on the board, 72 needed of just 66. Good looking shot. Mohammad Umar again in the gap. Two is the call. They are charging back for the second. Good running between the wickets. He has moved to 95. Mohammad Umar. 180 runs on the board. That's a mighty hit. Out of the park. 250 to chase. Final on the line. Pressure at its peak. And in the middle of it all, one man stood unshaken. Mohammad Umar. No fear, no panic. Just pure class. He built the innings brick by brick, reading the game, owning the moment. Every boundary carried belief, every shot silenced the pressure. And that is his century to remember for the age. He raises his bat, the crowd erupts, teammates on their feet, because this isn't just a 100, this is a match defining, pressure crushing, title winning knock. Muhammad Umar didn't just score runs today, he created a moment that will be remembered forever. Counter attack. For that inning of Salih Rathar, Muhammad Umar deserved the century. 188 for the loss of 2 wickets. A low-key appeal there by the bowler, but turned down immediately. 62 needed off, 60 on. Run a ball game from here. Cakewalk. It's a cakewalk. And he's gone. Omar is gone. Stumped out. He was looking to play a big shot again, but this time missing the line of the ball completely and keeper making no mistake at all. Third wicket down, but I feel Umar played the knock of the age. Played the knock of the ages for his team downtown Bijbehara. Mohammad Umar, magnificent innings by him. And he's taking a long walk back to the dugout, but appreciations everywhere for him because he has done his job pretty well. Zaman olur.
Mohammad Ashraf bowling. वन नाइन फोर रन्स बोर्ड पे 3 विकेट के नुकसान पे ये मैच बहुत ही आसान दिखाई देता हुआ यहाँ से डाउनटाउन बिजबेहारा के लिए। सिर्फ 54 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 6.22 का आस्किंग रेट, रिक्वायर्ड रन रेट, और सिर्फ स्पिनर्स का इस्तेमाल किया है रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा ने। ये थोड़ा सा मेरी सोच से काफी परे है ये चीज कि आखिर एक भी पेसर नहीं है आपके पास 30 ओवर के गेम में। मैं मान के चलता हूँ कि स्पिनर्स को थोड़ी सी मदद मिलती है इस विकेट पे, बट एट द सेम टाइम if you're not playing with any pacer, how is your bowling the strongest? It's not. Simply, your bowling is not strong enough to tackle down the batsmen of downtown Bijbehara. और आज वो चीज़ एक्सपोज भी होती हुई। आप अभी तक आए हो इस मुकाबले में, आपने बिल्कुल मैच जीते हैं, अपने बड़ी बड़ी टीम्स को हराया है, लेकिन जब फाइनल का गेम होता है तब प्रेशर होता है दोनों टीम्स पे। उस प्रेशर में कौन अच्छे तरीके से खेलेगा वही मैटर करता है। आज पूरा प्रेशर सो किया है डाउनटाउन बिजबेहारा ने, एंड लुक, द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग दिस गेम। Junaid Noor just simply placing it, guiding it towards the third man area. 2 is the call. They are charging back for the second. That's excellent running between the wickets. Downtown Bijbehara, they are marching along in this run chase. Junaid Noor, fresh legs with him. Adnan Tak, he's batting on 18 of 19 balls. Run a ball situation needed for the team. That's what the doctor ordered. Single on this occasion as well. 199 for the loss of 3 wickets. One more delivery to come in this over.
Stratford with full power between the gap. Well stopped there by the fielder near the cow corner area. But two on this occasion also. 200 come up for downtown Bijbehara. They just require 49 in the remaining 8 overs. Cakewalk again. Score 201. 201. Bowler Prasad. That's the one. Prashant में Mahmoud Ashraf. Saptagirim kaç? Saptagirim falan kaç? Saptagirim.
42 गेंदे 46 रन। मुहीब शफीक और अदनान टाक सेट हो चुके हैं, अभी भी क्रीज पे मौजूद है। अदनान ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है अभी तक, 20 रन बनाए हैं। इस बार मुहीब शफीक डाउन द ग्राउंड गए हैं, एक रन जरूर मिलेगा और एक रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा मुहीब शफीक को। इन दोनों पे अब जिम्मेदारी है कि ये इस मैच को फिनिश करे और अपनी टीम को ये टाइटल जिताए। इरफान लेफ्टी अपना चौथा ओवर करते हुए, अदनान ने हल्के हाथों से खेला ऑन साइड की जाने, एक रन जरूर मिलेगा और ये अच्छी सोच है। इस वक्त बस आपको स्ट्राइक रोटेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। 206 रन बोर्ड पे, 4 विकेट के नुकसान पे, 44 चाहिए 39 बॉल्स पे। हल्का सा मुंह खोला बल्ले का और एक रन मिलेगा यहाँ पे। अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है, अच्छी सोच। और नो बॉल सिग्नल अंपायर का यहाँ पे आएगा। विकेट कीपर ने अपने ग्लव से स्टंप्स के ऊपर जो बेल्स होते हैं उनको गिरा दिया था, तो इसके चलते नो बॉल का सिग्नल अंपायर का आया है और अब फ्री हिट भी मिलेगी अदनान को, एक लाइसेंस मिलेगा। क्या अदनान एक बड़ा शॉट खेल पाएंगे इस गेंद पे? अदनान टाक के पास पूरा लाइसेंस, बड़ा शॉट खेलिए और खेला भी बड़ा शॉट डाउन द ग्राउंड। गोली की रफ्तार से ये गेंद गई है, हालांकि फील्डर ने बहुत मेहनत मशक्कत करके रन बचाए हैं दो अपनी टीम के लिए, लेकिन दो और वैल्यूएबल रन्स ऐड होते हुए डाउनटाउन बिजबेहारा की इस इनिंग में केवल 40 रन दूर अब जीत से, इस टाइटल को डिफेंड करने से। टीसीआई मैक्स प्रेजेंट्स विंटर कप 2025, 2024 में भी इन्होंने बाजी मारी थी और 2025 के सीजन भी इनका जरूर हो सकता है। 2025 में ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था विंटर्स में, विंटर्स के चलते डिले करना पड़ा, हॉल्ट करना पड़ा, और जो ही विंटर्स खत्म हुए, जो ही फिर से स्प्रिंग का मौसम हमारी खूबसूरत वादी कश्मीर में आ गया, तो फिर से क्रिकेटिंग एक्टिविटीज रिज्यूम हुई नीलंदर के ब्यूटीफुल वेन्यू में और आज फाइनल खेला जा रहा है इस टूर्नामेंट का। बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेली है दोनों टीम्स ने अभी तक, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है दोनों टीम्स ने, लेकिन आज जो जीतेगा वही सिकंदर और जो हारेगा वो लेकर जाएगा बहुत सारी यादें और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। 212 बोर्ड पे 24 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 38 रन चाहिए जीत के लिए यहाँ से डाउनटाउन बिजबेहारा को। रिक्वायर्ड रन रेट लेस देन 7, इट्स 6.33 फ्रॉम हियर।
एक सफलता दिलाई है मोहम्मद अशरफ ने, फिर से अपनी टीम को क्लीन बोल्ड कर दिया है। अदनान टाक को वापस जाना पड़ा और अब जो नए खिलाड़ी आए हैं क्रीज पे वो है जीशान जहूर। जीशान जहूर आए हैं नए बल्लेबाज। जीशान जहूर कुछ बड़े शॉट्स खेल सकते हैं लेकिन अभी दरकार नहीं है उन बड़े शॉट्स की। आपका जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बराबर 6 रन पर ओवर का है। यहाँ से आपको चाहिए कि स्ट्राइक रोटेट करे, ज्यादा रन बनाने नहीं है आपको और सिंगल्स डबल से काम चल जाए। बीच में एक आध बाउंड्री आ जाएगी तो आप अर्ली फिनिश कर सकते हैं गेम को। सोच ये होनी चाहिए कि कैसे मैं सिंगल्स पे फोकस करूं। आते ही एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, सिंगल मिलेगा जीशान जहूर को और वो स्ट्राइक पे लाएंगे मुहीब शफीक को। 217 रन बोर्ड पे मुहीब 5 गेंदें खेल चुके हैं, 4 रन उन्होंने बनाए हैं। धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ती हुई डाउनटाउन बिजबिहारा की ये टीम, बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है डाउनटाउन बिजबिहारा ने। हालांकि बैटिंग भी बहुत जबरदस्त रही है रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा की, लेकिन बॉलिंग में वो धार दिखाई नहीं दी आज। जिस शैली की बॉलिंग होनी चाहिए थी उस शैली की बॉलिंग हुई नहीं है और मेरा मानना कि बॉलिंग और बेहतर हो सकती थी रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा की। देखिए जब आप 250 बनाते हैं तो अपने बॉलर्स को अपने बैक करना होता है। एक भी पेसर नहीं था उनके पास, खाली स्पिनर्स का उपयोग किया और कहीं ना कहीं मेरा मानना कि जब बैट्समैन ने एक दो ओवर खेले स्पिनर्स के तो काफी यूज्ड हो गए फिर। और जब यूज्ड हो जाते हैं बैट्समैन, परवेज रसूल फिर कहाँ छोड़ने वाले थे, या मोहम्मद उमर जिन्होंने सेंचुरी बनाई वो भी कहाँ बख्शने वाले थे आपको। जब आप एक प्रकार की गेंदबाजी करते हैं बार बार आप स्पिनर्स को लाएंगे तो बैट्समैन सेटल हो जाता है क्रीज पे। इस बार अच्छा शॉट, इस शॉट में ताकत है, अच्छी फील्डिंग वहां पे लॉन्ग ऑन की जानिब। 2 रन्स बचाए अपनी टीम के लिए, लेकिन अब लग रहा है कि ये मैच फिसल गया है हाथ से। रफी स्पोर्ट्स क्लब सुभानपुरा के हाथ से ये मैच फिसल गया है क्योंकि उस प्रकार की बैटिंग हुई है आज डाउनटाउन बिजबिहारा के बल्लेबाजों से। जीशान जहूर और मुहीब 30 रन 30 बॉल, यह है इक्वेशन यहां से इस मैच को जीतने के लिए। यहां से मैच बहुत ही आसान दिखाई देता हुआ डाउनटाउन बिजबिहारा के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 6.21 का, and it should be very easy for downtown Bijbehara actually from here.
Zishan Zahoor and Muhib Shafiq, two batsmen out there in the center, playing a miss. Was far from the reach of the batsman. It will be considered as a wide called by the umpire. Ishfaq left his bowling his fifth over. He has taken two important wickets, but I think it will not help them at all. And one trick that I said earlier, the bowlers of Rafee Sports Club Subhanpora missed the captain there actually, not using any medium pacer. I know you were relying on Sipners basically, but you should have got a Sipner into the attack early on when Parvez Rasool and Mohammad Umar was batting. Only Sipners were bowling at that time. No use of pacers at all. And by the time they got used to those Sipners, that's how they scored some excellent runs. Mohammad Umar with that century and Parvez Rasool with an exceptional half century in the winning cause to defend the title of TCMX Presents Winter Cup 2025. They won the edition of 2024 as well, and now they are on the verge of winning the 2025 edition as well. Rafee Sports Club Subhanpura, their batters did a great job considering the fact Salid Rathari scored a magnificent 155 runs, but it was not enough. The masterclass, the batting power of downtown Bijbehara, they dominated the show throughout. The bowling of Rafee Sports Club was not up to the mark, to be very precise. Required run rate less than 7 at 6.25. Muhib and Zishan Zahoor out there in the center, and they believe they can chase this down as soon as possible. 24, 25 required of 24. Relaxed What faces is the of the score? batsmen. Relaxed face of the batsmen of downtown Bijbehara because they know One that they more are ticket marching for along. Number They one, number know one. they know that it will be a cakewalk for them. All the credit goes to Muhammad Umar, all the credit goes to Parvez Rasool for that stand of 100 runs. First up, outstanding skill set, outstanding composure shown by these two batsmen. Now, they are going to win this game. 225 for the loss of 5 wickets. A discussion is going on. Maybe the batsman changing his bat. Current run rate 8.65. That has been the story of the day. Welcome to the presentation of TCM Next Presents Winter Cup. Next presents Winter Cup 30 over Winter Cup tournament 30 over. Huh? 30 overs. 30 overs Winter Cup. Clear? What about any TCI Military Cricket Association should not govern all last tournament Swamp भी 30 ओवर बाकी हुई जो TCI मैक्स का थोड़ा ये ना ये प्लेयर भी स्पॉन्सर्ड उसके बाद गोइंग बैक टू द अवार्ड ऑफ
4. Chairman. Teyze लिखी दे Omble.
थोड़ा सा एक रुख पलटा है गेम ने, कुछ विकेट्स गिरे हैं, उसके चलते थोड़ा सा दबाव यहाँ पे डाउनटाउन बिजबिहारा की टीम पे। 7 विकेट्स गिर चुके हैं और उमर आए हैं नए बैट्समैन क्रीज पे, उमर रसूल और उमर खुर्शीद अभी अभी आउट होके वापस जा रहे हैं। हालांकि गेम बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, केवल 14 रन चाहिए 13 बॉल पे। मुहीब शफीक अभी भी क्रीज पे मौजूद है और कहीं ना कहीं जब तक मुहीब मौजूद है तो मुमकिन है। Nine required of the 9. That is the equation from here. Downtown Bijbehara, Umar Rasool is on the crease. 9 needed of 9. Umar Rasool cuts it off. Calls for a quick single. They're charging back for the second. Good running between the wickets. Umar Rasool will take that double. Now the equation comes to 7 of 8 deliveries for Downtown Bijbehara. Again, guided this one, but no run at all. 7 of 7. 7 of 7. That is the equation. This game is not for the weak-hearted. Last ball of this over.
That's a good shot between the gap. Two is the call again. They are rushing back for the second chance of a run out. He's gone. Umar Rasool run out at a very crucial stage. Now 6 needed of 6. It's the 8th one down. Downtown Bijbehara cannot believe this. The run was on there, but Umar Rasool was not able to cover the ground properly. Margin new batsman. Power on. 14. Bowler name. Number one, Ahmed Dilawan. Six needed of 6. That is the equation from here. Hazim Tahir, new man in, but he will be at the non-striker's end. Muhib Shafiq on strike. It's a game to remember for eights. Edge of the seat thriller. 6 of 6. Ahmad Dilawar to Muhib Shafiq. Muhib goes down the ground. Beautiful timing. Two is the call. They are charging back for the second. Good running between the wickets. Players are born under pressure, and Muhib Shafiq is one among them. When wickets were falling from the one end, he stood tall and he's still delivering for his team. 4 required of 5 balls. Ahmad Dilawar. They need to take a wicket of Muhib Shafiq in order to win this game. But at the other end, Muhib will like to finish this game on his own. Just like that, he goes over the top. Where is this one going? It's going for a boundary. That is the game sealed. What a day, what a chase, and what a statement. In the grand finale of the Winter Cup 2025, downtown Bijbehara once again proved why they are the best in the business. Chasing a daunting target of 250 in a high pressure final, they didn't just win, they dominated. All eyes were on Parvez Rasool, the experienced campaigner, the backbone of the team, and he delivered when it mattered the most. A magnificent 50 from him, and after that, Mohammad Umar, fearless, composed, and unstoppable. Downtown Bijbehara chased down 250 and sealed the title in style. Back-to-back champions, Winter Cup 2024, and now Winter Cup 2025 as well. Thank you so much everyone for joining.